Hello children, welcome to your maths class. Children, in our previous video, we were doing chapter 16 of your maths textbook. In fact, we had started chapter 16 of your maths textbook in our previous video. And we had done some exercise also related to the topic. So, in today's video, we will continue the same topic, that is pattern, and we will do few more questions on pattern. But before starting new exercise, we will revise what we did in our previous video, what we learned in our previous video. Children, I explained you what pattern is. Pattern is arranging any object, any picture, any shape, any number in such a particular manner, in a special manner, and then repeating it over and over again. Repeating that arrangement again and again. That is called pattern. Arranging some figures, some shapes or numbers in a particular manner and then repeating that. It is a repetition of some series or sequence. That is pattern. And we did few questions. So today we will do few more questions as I told you. So open your book and chapter number 16. Chapter number 16. And we were doing pattern, that is patterns in shapes. This we were doing. We were doing patterns in shapes. P-A-T-T-E-R-N-S, patterns in shapes. We will do few more questions on the patterns in shapes. We have done four questions of this topic, and today we will do two or three more. Then, so let's start the fifth one. We have done this pattern we have already done. Circle, triangle and rectangle, this we have already done. Circle, triangle and a rectangle. Children, we did this pattern and I told you that this is the arrangement of shapes. This is the arrangement of shape, circle, triangle and rectangle. Circle, triangle, rectangle, this is the arrangement of shape and this is repeated here. Same, this arrangement is repeated here. And creating a pattern. This we have done. Then the second one was a triangle, two squares, and then inverted triangle, then two squares, then upward triangle, then again two squares. Second one was this. Upward triangle, two squares, then inverted triangle, then two squares, then upward triangle, two squares, and so on. So children, here the pattern is this one. This is the arrangement of shape. This is the arrangement of shape. Upward triangle, two squares, downward triangle. Okay? Children, here this is changing. The triangle is changing, upward, downward, upward, but squares are same, and this change is taking place after every two squares. यहाँ इस पैटर्न में आपने देखा कि only this is changing, the triangle is changing, here it is upward, here it is downward, then again it is upward, and this change is taking place. ये change कब हो रहा है? After every two squares. After every two squares, this change in the triangle is taking place. So this is the pattern of the second figure. Then another one is upward arrow and then towards right. Upward arrow, then towards the right. Upward arrow, then towards right. So here the pattern is, the arrangement of arrow is like this. This is the arrangement of arrow. Two upwards, one towards right. Two upwards, one towards right. Two upward, one towards right. So this is the arrangement. This is the arrangement which is repeated here.
This is the arrangement which is repeated here and creating a pattern. Another one is a circle, vertically cut. Here it is horizontally cut, then vertically cut, then two circles, horizontally cut. Children, look at this pattern. Here the cut is horizontal, here the cut is vertical and here it is horizontal. मतलब यहाँ पे खड़ा कटा है और यहाँ पे ऐसे लाइन पोजीशन में है. ये स्टैंडिंग है, ये लाइन है. स्टैंडिंग टू लाइन, स्टैंडिंग टू लाइन. एक सीधा, दो लेटा हुआ, फिर सीधा, फिर दो लेटा हुआ. So this is a repeated. This arrangement is a repeated and creating a pattern. Now we will do another one. So next one is square, then two rectangles, then again a square, one is square, two rectangles, then circle, then square, two rectangles, and then circle. Now children, observe the arrangement of shapes. Observe the arrangement of shape. Here, one square, two rectangles, one circle. This is the arrangement of shapes. This is the arrangement of shapes. You can see here, one square, two rectangles, and one circle. One square, two rectangles, one circle. This is repeated. This arrangement is repeated here. One square, two rectangles and one circle. Same thing is repeated. Again, what will be the next? One square, two rectangles and one circle. Okay? Got it? This is the arrangement which is repeated and creating a pattern. Square, two triangles, circle. Square, two rectangles and circle. Square, two rectangles, circle. Square, two rectangles, circle. This is the arrangement of shape. Got it? Square, two rectangles, circle is arrangement of shapes which is repeated there. Square, two rectangles, circle. Square, two rectangles, circle. So we can easily say what will be the next in the sequence. अब sequence में next क्या होगा? Sequence में next क्या होगा? Again we will have a square, two rectangles, circle. Again a square, two rectangles, circle, and this will continue. I hope this pattern is clear. Now we have a few more. Tick the shape that comes next. Another exercise is you have to tick the shape that comes next. मतलब एक arrangement दिया हुआ, एक sequence दिया है, and you have to tell which shape will come next in the sequence. Which shape will come next in the sequence. A sequence is given and you have to tell what will be the next shape. Next shape क्या होगा उस sequence में? उस sequence का next shape क्या होगा? I will draw what is given there. A cuboid is there. A cuboid is there, then a cylinder is there. A cuboid is there, a cylinder is there, again a cuboid is there. Again a cylinder is there. Then again a cuboid.
Okay. Cuboid, cylinder, cuboid, cylinder, cuboid. What will be the next in sequence that you have to tell? That you have to tick. Actually, you have to tick the correct figure which will come here. As you can see, this is cuboid. Next is cylinder. Then again cuboid. Then cylinder. Again cuboid. Then what will be the next figure here? ऑप्शंस आर गिवन अ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. ऑप्शंस में आपने देखा होगा ऑप्शंस में एक क्यूबॉइड बना हुआ है और एक सिलेंडर बना हुआ है. एंड द ऑप्शन in the option a cuboid and a cylinder is given. So you have to tick the correct option. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व द पैटर्न. आपको पैटर्न दिख रहा है, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर, है ना? क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर, क्यूबॉइड सिलेंडर. So this is the correct option. Means the cylinder will come here. यहाँ पर आएगा आपका again a cylinder. Okay. So in this way you have to tick the correct option. Got it? Now next question. Next one is, children, as we can see, these patterns are related to shapes. All these patterns are related to shapes. Okay, these patterns are related to shapes, so we will draw only shapes, either 2-dimensional shape or 3-dimensional shape. या तो 2-dimension वाला शेप या 3-dimension वाला शेप हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो वी आर यूजिंग नाउ हियर द अनदर पैटर्न इज अ कोन एंड अ क्यूब. Two cones, one cube, again two cones, one cube, okay, two cones, one cube, two cones, one cube. Okay, then one cone is already made. What will be next in the sequence? Sequence में next क्या है? That you have to tick. What will be next in the sequence? इस sequence का next figure क्या होगा? तो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ शेप्स. पहले आप इन शेप्स का अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्व कीजिए एंड देन यू विल कम टू नो विच फिगर विल कम हियर, विच फिगर विल बी हियर. एज वी कैन से देयर आर 2 cones and 1 cube. Then again 2 cones and then 1 cube. Again there should be 1 cone or 2 cone. As per the sequence here only 1 cone will be there or 2. जैसा आप इस सीक्वेंस देख रहे हैं कि देयर आर 2 cones है, 2 cone है और उसके बाद एक क्यूब है. 2 cone है और एक क्यूब है, फिर 2 cone है और एक क्यूब है. तो यहाँ पर एक क्यूब होगा, सॉरी एक कोन होगा कि 2 कोन्स होंगे? यहाँ पर 2 cones 1 cube, 2 cones 1 cube. तो यहाँ पर एक ही कोन होगा कि एक और कोन होगा? What will be the next shape here? And options आपके पास हैं. Options है आपके पास cone. And children, as per the book, this is yellow cone, this is blue cone. This is yellow cone, this is blue cone, and this is yellow cone. तो ऑप्शंस में आपके पास है येलो कोन एंड ब्लू कोन, एंड अ क्यूब.
This is the option. These are the options, and among these options you have to pick one. आपको इनमें से एक लेना है. Now here you have to look at the color of the cone also. You have to see the color of the cone. Because this is yellow and this is blue. Okay, this is blue. Then a cube. Then this is yellow and blue. Then cube. Again this is yellow. Then which shape will be here and what will be its color? यहाँ पे कौन सा shape होगा और उसका color क्या होगा? So as per the sequence, दो cones होने चाहिए, तो only one cone is here. दो cone होने चाहिए sequence के हिसाब से 2 है, तो यहाँ पे दूसरा cone ही आएगा. यहाँ पे आएगा एक और cone, लेकिन वो कौन से color का होगा? Yellow या blue? कौन से कलर का होगा? और येलो ऑलरेडी है, इसका मतलब कौन सा होगा? ब्लू. तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा ब्लू कलर का कोन. बिकॉज येलो पहले से ही है, तो हमें क्या चाहिए? ब्लू. क्योंकि येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू. ओके, एज यू कैन सी येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू. तो ये हमारा दिस इज द करेक्ट चॉइस. हम लेंगे ब्लू कलर का कोन इन द सीक्वेंस. नेक्स्ट जो सीक्वेंस में होगा वो ब्लू कलर का कोन होगा. इट विल बी अ कोन ऑफ ब्लू कलर. ओके, नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट, next figure, next pattern is football is there. I am not able to draw football properly, तो मैं ऐसे ग्राफ फुटबॉल बनाऊंगी आपके लिए. You can see in the book. This is the football, a rough football. I have not drawn it properly, but as you can see, it's a football. So there are 2 footballs and 1 cube. 2 footballs and 1 cube. Okay, I hope it looks like a football. आपको फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा ये. 2 footballs and 1 cube. Then 1 football and then 2 cubes. I have to draw from here. It is somewhat looking like football, but not exactly like football. लेकिन थोड़ा थोड़ा फुटबॉल जैसा लग रहा है. At least you can feel that this is a football. Okay, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ. It is already there in the book. You can look into your book. Okay, just to give you an idea of football. So this is 2 footballs, 1 cube. 1 football, 2 cubes. Then again 2 football. So what will be? Again, then a cube is there. 1 more cube is there. So children, you can observe the pattern. एक बार आप इस pattern को observe कीजिए. What will be next in the figure? इसमें next क्या होगा? Let's check. Next क्या होगा? Let's see it. 2 footballs
2 footballs, 1 cube. Then 1 football, 2 cubes. Got it? जब 2 फुटबॉल है तो 1 क्यूब है, 1 फुटबॉल है उसके बाद 2 क्यूब्स हैं. गेटिंग द पैटर्न? पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? 2 फुटबॉल है तो 1 क्यूब है और 1 फुटबॉल के बाद 2 क्यूब है, फिर 2 फुटबॉल है तो 1 क्यूब है. तो अब नेक्स्ट व्हाट विल बी हियर इन द सीक्वेंस, विच फिगर शुड बी हियर इन द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या होगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. यू आर गेटिंग द पैटर्न? आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? 2 फुटबॉल है तो 1 क्यूब है, 2 फुटबॉल के बाद 1 क्यूब है और 1 फुटबॉल के बाद 2 क्यूब है. 2 फुटबॉल के बाद 1 क्यूब, 1 फुटबॉल के बाद 2 क्यूब, फिर 2 फुटबॉल के बाद 1 क्यूब. चेक दिस. 2 फुटबॉल 1 क्यूब, 2 फुटबॉल्स 1 क्यूब, 1 football 2 cubes. So again this pattern is repeated. This is the arrangement. ये पूरा अरेंजमेंट है, इसको आप देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा. लुक एट दिस अरेंजमेंट. 2 footballs, after 2 footballs 1 cube and after 1 football 2 cubes. Now this will be repeated. 2 footballs, जैसे ये 2 फुटबॉल है, again 2 footballs are there. Then 1 cube is there. Okay. Now rest is here. You can see जैसा ये 2 फुटबॉल है वैसा ही यहाँ पे 1 फुटबॉल है, फिर 1 क्यूब है, वो 1 क्यूब है. So what should be next in the sequence? क्या होगा यहाँ पर? Yes, next will be a single football. आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर आपको दिखा रही हूँ. 2 footballs 1 cube. Okay. Then 1 football 2 cubes. This is the whole arrangement of shapes. Okay. Now this same thing will be repeated. ये पूरी की पूरी वही चीज फिर से रिपीट होगी ताकि पैटर्न क्रिएट हो. तो यहाँ देखिए जैसे ये 2 फुटबॉल है वैसे फिर से वो 2 बॉल रिपीट हो रही है, उसके बाद 1 क्यूब है तो वो 1 क्यूब रिपीट हुआ है. तो अब नेक्स्ट क्या रिपीट होगा? सिंगल फुटबॉल. तो जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस में आपको 1 क्यूब इज गिवन. ऑप्शन में आपके पास 1 क्यूब है और यू हैव 1 फुटबॉल. आपको 1 फुटबॉल है ऑप्शन में. ओके. ओके. तो यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन फुटबॉल. आपको ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करना है? फुटबॉल. यहां पे आएगा हमारा ऑप्शन में, हमारा आंसर आएगा फुटबॉल. Got it? Now the sequence: 2 football 1 cube, 1 football 2 cubes, 2 football 1 cube, 1 football. Again next will be 2 cubes. So this will create a pattern. This will create a pattern. I hope this is clear to you. ये आपको shapes वाला समझ में आ रहा होगा अच्छे से. The way it is arranged. Now we will do one more. एक और करेंगे हम. We will do one more of such type. एक और हम कर लेते हैं तो आपको it will become more clear to you. एक और हम shapes इसमें कर लेते हैं. Let's have 1 ball, single ball. Okay. 1 cone, then 2 balls, then 1 cube. Okay, then 1 ball, 1 cone, 2 balls. What will be next in the figure? What will be next in the
फिगर. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न. अब आप पैटर्न देखिए किस तरह से बनता है. 1 बॉल 1 कोन 2 balls 1 cube. This is the pattern. This is the arrangement of shape. This is the arrangement of shape. 1 ball 1 cube 2 balls 1 1 ball 1 cube 2 balls 1 cube. Okay. 1 ball 1 cone 1 ball 1 cone 2 ball 1 cube. ये हमारा अरेंजमेंट है शेप का. ये हमारा शेप का अरेंजमेंट है. एक बॉल है, एक कोन है, 2 बॉल है, एक क्यूब है. नाउ दिस इज अगेन सेम थिंग इज रिपीटेड. 1 बॉल 1 क्यूब, सॉरी 1 कोन, मैं इसको बार बार क्यूब बोल रही, एक कोन, सॉरी दिस इज कोन. 1 ball 1 cone 2 balls 1 cube. Here 1 ball 1 cone 2 balls. What will be the next in the sequence? यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपने पैटर्न, आपने अरेंजमेंट शेप का देखा. एक बॉल है, एक कोन है, फिर 2 बॉल्स है, एक क्यूब है. सेम थिंग इज रिपीटेड. 1 ball 1 cone 1 ball 1 cone and then 2 balls. So next will be क्यूब. तो हमारे ऑप्शन में अगर हमारे पास कोन है और ऑप्शन में हमारे पास अगर क्यूब है और ऑप्शन में हमारे पास एक और बॉल है, तो which figure we will select? Which figure we will select? We will select here again क्यूब. हम क्यूब को ही सेलेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट फिगर जो है वो क्यूब है. कैसे क्यूब है? अ बॉल, अ कोन, 2 balls, cube. A ball, a cone, 2 balls, सेम टाइप का बॉल बनाना है ना हमको. 2 balls then 1 cube. तो यहां पे हमारा आएगा क्यूब. Got it? Now the pattern is complete. 1 ball 1 cone 2 balls 1 cube. 1 ball 1 cone 2 balls 1 cube. And the pattern will be complete. ये पूरा पैटर्न हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा. Got it? I hope this पैटर्न ऑफ शेप्स इज क्लियर टू यू. जो शेप्स के साथ जो हमारा पैटर्न है ये अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा. यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व द अरेंजमेंट. आपको अरेंजमेंट देखना है और फिर उसी अरेंजमेंट के हिसाब से उसका रेपिटेशन चेक करना है और कैसे रिपीट हो रहा है उसके रिपीटेशन को चेक करना है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच फिगर और विच शेप विल कम नेक्स्ट. पहले आप अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो देखेंगे कि कैसे वो रिपीट हो रहा है और फिर रिपीटेशन में कौन सा फिगर आना चाहिए या कौन सा शेप आना चाहिए या कौन सा ऑब्जेक्ट आना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न्स. ये पैटर्न में क्योंकि हम शेप का कर रहे हैं तो हम शेप्स को देखेंगे. हम शेप्स को ऑब्जर्व करेंगे कि उनका अरेंजमेंट क्या है. ठीक है, शेप का हमने देख लिया अरेंजमेंट क्या है. फिर उसका रिपीटेशन को चेक कर रहे हैं कि वो उसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, तो उस सीक्वेंस में रिपीटेशन में नेक्स्ट शेप कौन सा होगा. तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या फिगर, कौन सा शेप हमको सिलेक्ट करना है. एंड योर पैटर्न विल बी कंप्लीट. योर पैटर्न विल कंप्लीट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, ये हमने पैटर्न्स इन शेप कर लिया है. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स का कर लेंगे. नॉट ऑफ शेप बट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मे बी फ्रूट्स, मे बी कटलरी, या दूसरे किसी ऑब्जेक्ट्स का हम प्रैक्टिस करेंगे. बिकॉज आई थिंक द शेप इज क्लियर टू यू, पैटर्न्स इन शेप इज क्लियर टू यू, बट यू नीड प्रैक्टिस. सो डू प्रैक्टिस एट होम. जो भी हमने आज किया है उसका आप एक बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको कोई अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा है या कोई सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क मी. लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो आप घर पर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करें एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ patterns of different objects. Okay, thank you.